4 to 5 years back, I was so inconsistent with myself that I used to hate myself and the way I was doing my things. But after years of struggle, I did something and it changed my life. Hey, hi there. My name is Sachin Deya, and welcome to this brand new video on how I became consistent from being inconsistent 4 to 5 years back. So, it will be my personal experience and personal story. But before that, if you have not subscribed to this channel, then kindly do so. On daily basis, I share shorts, and of course, on a weekly basis, I keep on posting a lot of useful stuff for you as a entrepreneur, as a habits coach, which can help you in your journey as well. So let's start jump into this video. Now इस वीडियो में मैं आपको अपनी एक पर्सनल स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ, how I started my life, like how I was 5 to 5 years back, so inconsistent, so no what do you call stressed out, no, don't know what exactly I gonna do with myself. All my habits, I was eating late, I was sleeping for only for few hours, stressed, undisciplined. तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी 4 से 5 साल पहले. But things started to change when I did these things. Now I'm gonna share with you 3 simple steps or 3-step formula which I applied over a period of time, and it really helped me to stay consistent. And nowadays I'm much happier space, and I'm very happy that मैंने जो चीज़ें past में जो भी action लिए, they are helping me out in staying consistent most of the time. Of course, I would not say I'm 100% consistent with it always. Of course, my strike rate is around 85 to 90%, and which is pretty much I'm okay with that and happy. And also I have know when to switch my gears as well. It's very important. You should know कब ब्रेक लेना है और कब आपको डबल डाउन करना है अपने एक्शंस में. सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही सब बताने वाला हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द स्टेप नंबर 1. नाउ मैं आपको जो स्टोरी बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने वाज इन अ कॉर्पोरेट जॉब way back in 2018 2019. During that time, there was a lot of stress I used to take. काफ़ी काम बढ़ गया था, वर्कलोड बढ़ गया था in my work, and I started to take a lot of stress in my life. And from then onwards, I started to see those changes. My physical health, my mental health, वो उन पर सबका टोल आना शुरू हुआ. I was gaining weight, I was eating, my eating habit was not that great. My workout habit also मैंने छोड़ दिया था, because earlier before 2018 17 and 16 I used to do something for my body like gym, or if not gym, at least running or some kind of activities I used to do. बट वो मैंने छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ द वर्कलोड एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, एंड उससे मेरे रिलेशनशिप्स विद माई फैमिली ऑल्सो गेट हैम्पर्ड. सो ओवरऑल आई वॉज नॉट इन अ हैप्पी स्पेस, although I was growing in my profession, but I was not very happy within myself, and I used to crib myself. Self-image पूरा tarnish हो गया था, and of course I lost a lot of hairs as well during that time. Now, over a period of time, I feel that the very first important thing you need to which really helped me to came out of that situation, firstly, is clarity. Yes, this is the step number 1. You need to be absolute clear what exactly you want in your life and what kind of habits you want to have. Now at back then, when I reflect back, I can still narrate that story, that I was sitting in my office and I was asking, hey, where my life is going, what I'm doing with my life, and what kind of life I want to live, what kind of person I want to become. So I started asking these kind of questions, and although at that time I was not very clear, it was all work only. I was there were a lot of clouded, lot of stuff was there only because of work, और मैं clearly think भी नहीं कर पा रहा था उस time पे. But now when I reflect back, I can say the clarity is the most important thing. First, you need to decide what kind of life or what kind of person you want to become. Right now, I always ask these kind of questions. What kind of person I want to become? And there is absolute clarity what I want, where I want to go. And then I ask what habits I need to have. तो वो हैबिट्स मैंने अपने पेपर पे लिखी, क्या वो मुझे हैबिट्स चाहिए हैं. हाउ इज़ माई फाइनेंशियल हेल्थ, हाउ इज़ माई फिजिकल हेल्थ, हाउ इज़ माई रिलेशनशिप विद माई लव्ड वंस, हाउ इज़ माई इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ. All these pointers I have written on a piece of paper, and I direct my actions. I operate on those kind of habits, like I use them in my day-to-day life, and मैं बस वही habit follow करता हूँ अपने लिए, and that is very important. So first thing is clarity. Now if you feel stuck, if you feel that you are not consistent in your life, I'm sure there must be a reason you are not clear why those habits you want in your life.
what kind of person you want to become, you are lack those confidence. So it's important to gain that clarity. अब वो कैसे आएगा? Of course by taking actions, but most importantly by having a mentor. मुझे mentor मिले 2019 में, and उससे मुझे काफ़ी मदद मिली, and उससे मुझे वो transformation, I started to, my thinking जो है वो change हुआ, because as you associate yourself with high kind of people or different kind of people who are way ahead than you, your thinking start, your thought process change, you start thinking differently and you take actions in a different direction. आपको थोड़ा हल्का हल्का स्विफ्ट अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में ऑटोमेटिकली दिख जाएगा when you start connecting with like-minded people or the people who can mentor you. So that is step number 1. Now let me quickly jump to step number 2. स्टेप नंबर जो 2 है, जो भी आपके गोल्स हैं आपको उनको ब्रेक करना होगा छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में. Now what I mean by that is, let's suppose you are inconsistent now in your life, okay? It's very important, and I'm sure you must be having one goal. It can be a goal related to your business, as a business owner, as a sales professional, or as any kind of working professional. Your goal should be like, I'm sure there must be a goal of earning that amount of money, और इतना लूज़ करना है आपको वेट, और जो भी है आपकी लाइफ में रीडिंग का जो भी हैबिट आप लेके चल रहे हो. इट्स इम्पॉर्टेंट टू ब्रेक इट डाउन कि आज उस गोल के लिए आप क्या कर सकते हो. इन प्रेजेंट मोमेंट व्हाट एक्शन यू कैन टेक, right? It's important to have that goal clearly, but it's also very important to what you can do in present to move towards that goal. ये भी होना बहुत ज़रूरी है. बट काफ़ी लोग सोचते हैं बस वो गोल पे ही फोकस करके रह जाते हैं और भूल जाते हैं कि मुझे एक्शन तो आज इस प्रेजेंट मोमेंट में ही लेना है. एंड दे कीप ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग, कीप ऑन बस सोचते रहते हैं और वो एक्शंस नहीं लेते हैं. दे ओनली विश but they don't take actions, and that is one of the biggest mistakes that you can do. So it's important to take actions as well. So break down your habits into your actionable steps. Now this is what I done. जब मुझे clarity आना शुरू हो गया, then I start taking those actions. तो मुझे पता चला कि बुक रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में. तो मैंने बुक रीड करना शुरू किया आधा घंटे, कुछ 10-20 पेज पढ़ना शुरू करा. सिमिलरली मुझे पता था कि आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू दैट जॉब, तो मैंने क्विट किया जॉब को और मैं अपने बिजनेस में आना शुरू किया. बिजनेस से आने के लिए स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट किए, और वो फ्रीलांसिंग के लिए भी मैंने कुछ ना कुछ सीखता रहा डेली बेसिस पे, कुछ घंटे की मेरे को, सो दैट आई कैन लर्न फ्रॉम देम. कुछ कोर्सेज मैं इनरोल किया, कुछ बुक्स मैंने पढ़ी, कुछ कम्युनिटीज़ का मैं पार्ट बना, जिनसे वो एक्शन बनते चले गए. So it's important to take actions and break it down into smaller, what you call task, so that आप procrastinate ना करो. That is step number 2. And step number 3 जो बहुत important है, जो इस फॉर्मूले का पार्ट है, वो है accountability. Yes, आपकी लाइफ में कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको अकाउंटेबल रखे. Now जब मैं बहुत inconsistent था, जब मैं बहुत अपने आप से I was not happy with myself, I start asking myself all those questions. But जब आप खुद के ही बॉस, जब आप बिजनेस में होते हो, या इफ़ यू आर एनी काइंड ऑफ ऑन व्हाट यू कॉल एनी काइंड ऑफ कोच, आई एम श्योर यू कैन रिलेट विद दैट. यू नीड टू हैव दैट अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि आपके पास अब बॉस नहीं है कोई. आप जब अपने वर्क में होते हो तब आपके पास बॉस होते हैं, वो आपसे सवाल पूछते हैं क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हो गया, एंड ऑल दैट लाइन होती हैं. बट जब अपने बॉस खुद के होते हो तो आपका बॉस कोई नहीं होता है. आप खुद के बॉस होते हो जब आप बिजनेस में होते हो. सो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को अकाउंटेबल रखना, और इसलिए काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर एक्शंस बहुत प्रोक्रेस्टिनेट. मैंने इतने कोचेस से मिला हूँ, इतने बिजनेस ओनर से मिला हूँ, दे प्रोक्रेस्टिनेट, they are not consistent. They always say, hey Sachin, I'm struggling with consistency, because there is no one to keep them accountable. और वहाँ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कुछ कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करो, आप कुछ ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करना शुरू करो जो आपको हेल्प करें उस गोल को तक रीच करने के लिए, और आपसे कुछ टफ सवाल पूछे अगर आप एक्शंस नहीं लो तो. नाउ आई स्टिल रिमेंबर माई मॉम यूज्ड टू आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कि आपने अब जॉब तो क्विट कर दी, अब नेक्स्ट क्या. सो आई ऑलवेज यूज टू हैव दैट रिमाइंडर इन माई माइंड, हे नेक्स्ट मुझे एक्शन लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है. अब आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आई हैव टू टेक एक्शंस. माई मॉम कीप ऑन रिमाइंडिंग व्हाट नेक्स्ट यू गोना डू, what you are up to, and all those questions. तो वो जो क्वेश्चंस मेरे से पूछते थे मॉम, वो मुझे बहुत पुश किया उन्होंने कि मेरे को एक्शन लेने ही पड़ेंगे, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन. एंड स्टिल व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक टुडे, नाउ आई हैव कोचेस, नाउ आई हैव communities which I am part of, जो मुझे पुश करती रहती है एक्शन लेने के लिए. एंड आई हैव माई पार्टनर who is keep on asking me question कि hey Sachin, you told me that you want to achieve this, but आप एक्शन तो ले ही नहीं रहे हो वहाँ पे, so let's take action in that direction. So all these kind of question, all these kind of stuff really help me. Of course
प्रोक्रेस्टिनेशन एक बेसिकली क्या होता है, जब आप शुरू नहीं कर पाते हो किसी काम को, बट जब आपके पास अकाउंटेबल पार्टनर होते हैं वो आपको पुश करते रहेंगे टू टेक दैट एक्शन. सो दिस इज हाउ दिस अकाउंटेबिलिटी थिंग रियली हेल्प मी. एंड ये एक फॉर्मूला, एक पैटर्न मैंने अपनी लाइफ में देखा जिसने मुझे बहुत हेल्प करा, विच आई एम श्योर गोना हेल्प यू एज वेल. फ्रॉम बीइंग वेरी इनकंसिस्टेंट, I used to hate myself, stressed and all. Now today running 2 different businesses, more than 6 figures. I'm very very happy that in whichever space I am today, I am able to execute and want to live that kind of life that I wanted to live. बहुत खुश हूँ. Of course, this is not the stage where I want to be satisfied with. I want to grow a lot. I have my own goals, but again I realize it's a process. तो उस जर्नी को आपको बहुत इंजॉय करना है. उसमें स्ट्रगल्स भी होंगे, लोज भी होंगे, डाउन्स भी होंगे, अप्स भी होंगे, एंड थ्रिलिंग मोमेंट्स भी होंगे. So this is again a journey. I know I have a lot of goals in front of me for this year, which I want to achieve, and I'm very passionate about it. And more than passionate, I'm very curious about it. Right? कि कैसे मैं उनको achieve करूँगा, and it's just that it's a different feeling altogether when you have that curiosity in you, rather than that stress and load. So these are the 3 simple steps which really helped me in my life to achieve my goals. And from 2018 to 2023 now, totally different person altogether. Now, I'm sure this is going to help you as well. So go ahead and implement this. Again, summarizing for all of you. 3 simple steps, 3-step framework which I share in my book. And to all my audience, be very clear on what kind of person you want to become. Design your habits, why you need those habits. Second, break down your habits into small actionable steps. And third, have an accountability partner. This will really help you to stay consistent in your life. Of course, it's not 100% consistent, but your strike rate, the way the lows that you face, the inconsistent periods that you face, it will be very low in your life. So go ahead and execute them, and do let me know how it helped you and how it worked for you. I'll be more than happy to listen to you. And once again, if you have not subscribed to my YouTube channel, then go ahead and subscribe it. I'm sure it's gonna help you a lot, because on weekly basis I keep on sharing valuable content on this channel, and I'm gonna keep on documenting my journey. जितने भी experience होंगे मैं आपके साथ share करूँगा, so that whatever I have learned, I pass this to all my audience. So thank you so much once again for listening to me. I will see you in the next video.